बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर विवाद गहरा गया है। विपक्ष के कड़े विरोध के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि क्या चुनाव आयोग लोकतंत्र का खात्मा होने दे? क्या आयोग जान गंवाने वालों, राज्य छोड़ने वालों और फर्जी वोटरों को वोट डालने दे? अब इस जवाब पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने जवाब देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान को कंप्लीट नॉनसेंस करार दिया है। राहुल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है। सुनिए और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने। मैंने जो कल बोला था, देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. क्या चुनाव का